students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing your chapter 24 exercise. Let's start with the filling blank. So the first filling blank is archaebacteria can tolerate high temperature up to dash. So answer है 120 degree centigrade. Second blank है the first eukaryote appeared about dash years ago. जिसका आंसर है 1.2 billion years ago. थर्ड है डैश प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसका राइट ऑप्शन है डार्विन. फोर्थ है डैश डेवलप अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आइडेंटिकल टू डार्विन, तो इसका आंसर है अल्फ्रेड वॉलेस. फिफ्थ है डैश आर कंसिडर्ड टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल सेल लाइफ, तो यहाँ पे आएगा प्रोकैरियोट्स. Sixth है a respiratory pigment called dash is found in all aerobic organisms. तो आंसर है cytochrome C. Seventh है the total aggregate of genes in a population at any time is called dash. The right option है gene pool. Eighth है Hardy-Weinberg theorem describe a dash population, जिसका आंसर है non-evolving. Ninth है dash is a series of changes in the genetic composition of population over time, जिसके right option है evolution. Tenth है the level of classification between the species and family is called genus. 11th है Hardy-Weinberg equation is the binomial expansion of p plus q whole square. And dash species is an imminent danger of extinction throughout its range, तो इसमें आंसर है endangered. 13 है dash is a localized group of individual belonging to the same species, तो right option है population. 14 है the first photosynthetic organism used dash as a source of hydrogen for reducing carbon dioxide to sugar, तो आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड. डैश पब्लिश एन essay ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो राइट ऑप्शन है मैल्थस. तो इसके साथ ही हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द MCQs.